Hello students, welcome again. Few days back I was there in a dental college, I can't name it, for a session out there on career guidance for final year students and interns. During that session there were a lot of interaction with the students talking about what is the future prospects of dentistry and many other options available after doing your BDS. Then I was sitting having cup of tea with some intellectual staff members of the same college. Again, I cannot name anybody, and yet again this question popped up in the conversation, and conclusively everybody had the same opinion. There is no future of BDS or MDS in India or across the globe actually. So मुझे ऐसा लगा कि after listening to this thought, let me just share opinion, not mine. Yes, to some extent it can be called as a personalized opinion, but it is something, a factual situation which we see all around us in the dental world. ये वीडियो सिंपल है. द टाइटल इज इन फ्रंट ऑफ यू. Is dentistry having any future? Is your degree called BDS or MDS has future or not? You are going to come across this question every day in your dental college, whether you are doing BDS or MDS. You can see the questions, the people discussing like debates on news channels on this topic on Facebook, Instagram, and many places. But nobody will actually share with you the insight what is happening in terms of the real people, the real world, about what they are doing in dentistry. So let's taking this forward. I'll start with a quote very very close to my heart, that if you choose a job you love, and then you will never have to work a day in your life. If your job is something you love day and night, then definitely it's not your burden on your work, and you will love to do it any time of the day, any time of the year, round the clock, years after year. So question is back again, what is the future of dentistry? क्या ये सही क्वेश्चन है? पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्वेश्चन सही है कि इफ somebody asks you what is the future of dentistry, डेंटिस्ट्री का फ्यूचर हम लोग कौन होते हैं बताने वाले या प्रिडिक्ट करने वाले? देर आर पीपल हु आर वर्किंग डे एंड नाइट to build dentistry a better place for tomorrow. Let us see some examples which will give you the, you can say, correlation, the logic what I want to portray in front of you. If you go back and see history of computers, 1960 में जब पहली बार कंप्यूटर बना, it was a very basic one. There was no algorithm, there were a lot of rules and regulations, there were very much limitations present in this computer. I remember such computers, one of those was present in my school in 1990s as well. Then 80s में बेसिक को थोड़ा एडवांस किया गया, कुछ लैंग्वेजेस बनाई गई, बेसिक वाज अ लैंग्वेज, लोगो, वर्ड स्टार, लोटस, many things were tried, Linux and all. Okay, फिर 2000 के आसपास आते आते we got the world's biggest gift to us, that is Windows. Then Apple came, Macintosh, and आज का कंप्यूटर era you all know. अगर 1960 में किसी ने ये सवाल किया होता ना बेसिक कंप्यूटर को देख के कि क्या कंप्यूटर का भी कोई फ्यूचर हो सकता है, then he would have been the biggest idiot of that time. If you see evolution of cars की शक्ल 18th century में कैसी थी, 19th century अर्ली में कैसी थी, एंड आज जो आप कार चलाते हो उसकी शक्ल कैसी है, you know that, and what is your dream car, you are still dreaming about it. Lastly, history and evolution of surgery. If we talk about proper surgery, okay, surgery was very crude, primitive in medieval worlds. Then few intellectual scholars used to still try it out. Then came the procedural branch, it came the evolution, having operation theaters with one person doing surgery and a lot of trying to learn from it. Nowadays, you have highly sophisticated robotic surgeries happening every day in India also, and across the globe. It is countless. Same coming back to this question. क्या ये question सही है? It's absolutely a wrong question. Future of dentistry is going to be advanced. If we go back and see, forget about जो आपको बहुत senior community से सुनने को मिलता है.
आप करंट वर्ल्ड का सुन लो, चलो जाने दो, मैं आपको अपना कहानी सुनाता हूँ। आई स्टार्टेड माई क्लिनिक इन 2006, 2006, 7, 8 तक मैक्सिमम कह लो। वी वर स्ट्रगलिंग दो स्टेज टू कन्विंस पेशेंट फॉर आरसीटी। पेशेंट को बहुत समझाना पड़ता था आरसीटी क्या होता है, दांत बचा भी सकते हैं, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे निकालने से, बट येस आरसीटी वॉज अ good treatment, a better treatment option. 2008 to 9, I did my implant training. In Delhi, there were hardly 10, 12 people who used to use the word implant in Delhi conferences. Okay, I did 1 year course and then I started pushing the thought of implantology. The sooner the later we realize कब ये transition happened, I can't draw a line today. Those are 9, 10, 11, 12 एक ऐसी situation आ गई, आज हमें आरसीटी नहीं बताना पड़ता पेशेंट को। पेशेंट आता है, मेरे दांत में दर्द है, आरसीटी कर दो एंड मेरा दांत बचा दो। 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक वी वर स्ट्रगलिंग टेलिंग पेशेंट अबाउट इम्प्लांट्स कि इम्प्लांट कराना चाहिए, अच्छा होता है, ब्रिज से बेटर है एंड व्हाट नॉट। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज टुडे, आज पेशेंट को कंपनीज के नाम तक पता होते हैं। लाइक इफ यू गो फॉर any treatment modality in dentistry, half the treatment or more than half are very well known to the world as on today. All thanks to your internet, all thanks to accessibility of information, all thanks to Google, rather say. Moreover, the current generation, that you generation, basically, I always say in professional colleges, junior batch जो होता है ना, जैसे मेरा जो immediate junior था वो next generation है, आपके जूनियर्स भी एक नेक्स्ट जनरेशन है, आप एक न्यू जनरेशन हो अपने आप में, एंड एवरी जनरेशन ब्रिंग्स अबाउट अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ। हर बैच एक नई कहानी, एक नए तरीके से एक प्रोफेशन को देखता है, एंड दैट इज हाउ यू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन विद एवरी पासिंग डे। सो बॉटम लाइन हेयर इज फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री इज इवॉल्विंग। 90s में अगर किसी ने सोचा होता ना कि आरसीटी 80s में या 70s में कि रूट कैनाल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम बोरीवली मुंबई, ही जॉइंड एनडीए, National Defense Academy, and we used to, he's like a Christian guy, we used to meet him on every Christmas, he used to invite us, and we used to have a blast. हर क्रिसमस पे उस लड़के का एक दांत एक्सट्रैक्ट होता था, एक या दो भी होते थे। एट द एज ऑफ 24-25 ही हैड लॉस्ट मेनी टीथ। द रीजन इज आर्मी दैट टाइम वॉज नॉट आइडेंटिफाइंग विद द साइकी ऑफ एंडोडोंटिक्स। उनके हिसाब से दांत दर्द हुआ है, दांत निकालो, आगे बढ़ो। ओके, बट यस, आज की डेट में इट इज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट डिसीजन। सो एवोल्यूशन तो हो रहा है, एवोल्यूशन हुआ है, आगे भी होगा। डेंटिस्ट्री पहले बेकार थी, सिर्फ दांत निकालते थे, दांत नकली दांत लगाते थे। फिर दांत बचाना शुरू हुआ, सफाई शुरू हुई, गम्स प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई, प्रिवेंशन पे फोकस आया, इंटरसेप्शन पे फोकस आया एंड व्हाट नॉट। आज की डेट में इफ यू टॉक अबाउट डेंटिस्ट्री ऑफ 80s and 90s and what we are doing today is way apart. Like I remember buying one type of bonding agent system in 2006 and what I am using today is much advanced what we are doing today. When we teach you in our academy, we teach you advances, you also know how much change is there. Like एक prosto का classical example, I teach DM, so I can give you जितने impression materials आप पढ़ रहे हो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद, nobody is going to use any impression material. You will be having scanners which are already there. This is the future, this is the evolution. ओके, सो अगर कोई आपसे बोलता है देयर इज नो फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज द राइट क्वेश्चन एक्चुअली? क्वेश्चन इज, क्या आपका फ्यूचर है डेंटिस्ट्री में? व्हाट इज योर फ्यूचर इन दिस प्रोफेशन? रिमेंबर, प्रोफेशन नेवर गेट्स एग्जॉस्टेड। सालों से मेडिकल चल रहा है, सालों से डेंटिस्ट्री चल रही है, सालों से आयुर्वेदा भी चल रहा है, होम्योपैथी भी चल रहा है, सब एडवांस हो रहे हैं, धीरे धीरे होते रहेंगे, वो कभी भी डिमिनिश नहीं होगा। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट जो खत्म हो जाएगा, विच हैज अ शेल्फ लाइफ, विच हैज एन एक्सपायरी, एंड वी आर नॉट एनिमल्स लाइक हु आर गोइंग टू बी प्रिमिटिव एनफ and get extinct like dinosaurs. We are humans with a lot of brain and we are going to keep on evolving with a lot of brain involved in that. Okay, next important thing of conversation जो हर कॉलेज में डिस्कस किया जाता है, discussions on Facebook and Instagram again,
There are too many dentists. If you type this too many dentists phrase on Google, you will see the result. The too many dentists are there everywhere. Okay, so क्या ये सही क्वेश्चन है? Because of too many dentists, the future is dark of BDS or MDS. Yes, there are more number of BDS. Yes, there are equally more number of MDS. But what the world needs now? World does not need more of BDS or MDS degree holders. बहुत डिग्री होल्डर घूम रहे हैं मार्केट में. ओके, 50 तरह की डिग्रीज अवेलेबल हैं. एक एक आदमी के पास, एक एक स्टूडेंट के पास 5-5, 10-10 डिग्रियां हो जाती हैं एक लाइफ टाइम में. बट क्या दुनिया को डिग्री होल्डर चाहिए? ये सही क्वेश्चन है. डज द वर्ल्ड नीड मोर ऑफ BDS और MDS? द आंसर इज नो. द वर्ल्ड डज नॉट नीड मोर ऑफ डिग्री होल्डर्स. व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एक्चुअली? द वर्ल्ड नीड्स पीपल लाइक यू, द नेक्स्ट जनरेशन, who are going to be problem solvers. Who are going to be problem solvers. Now, who are these problem solvers? You are the people who identify the lacunas, the limitations, the problems in the system. किसी ने आइडेंटिफाई किया, बार बार दांत निकालते हैं जब भी दर्द होता है. किसी ने इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा, उस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया कि भैया अगली बार से जब दांत में दर्द होगा तो हम दांत नहीं निकालेंगे, हम कुछ और ट्राई करेंगे. एंड उसने क्या है सोल्यूशन निकाला? रूट कैनाल ट्रीटमेंट. देन एवरीबडी वाज मेकिंग RPD, कंप्लीट डेंचर्स, FPD केम, एंड समडे समबडी रियलाइज्ड कि यार FPD से भी प्रॉब्लम है. FPD से 2 दांत सपोर्ट के लेने पड़ते हैं, अबटमेंट लेनी पड़ती है, तो अबटमेंट की लाइफ भी आगे जाके कमजोर हो जाता है, कम हो जाती है लाइफ. सी, यू कैन नॉट टेक योर ओन वेट for purposes. How can you take load of extra tooth onto your own shoulders? तो definitely अगर आप पे डबल बर्डन आएगा तो आप कोलैप्स करोगे ही करोगे. तो इम्प्लांट आ गया. देन every field has got scope like this. रेडियोलॉजी, कन्वेंशनल रेडियोलॉजी से IOPA से RVG आया, RVG से CT स्कैन आया, CT स्कैन से CBCT आया, आगे जाके कुछ और आएगा. सर्जरीज में वी आर टचिंग ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेवल ऑफ रोबोटिक सर्जरीज. सो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे. सो बेसिकली द वर्ल्ड डज नॉट नीड मोर ऑफ डिग्री होल्डर्स. सो प्लीज, ऑल दोज परस्यूइंग BDS and MDS, or you are about to enter MDS, start thinking on the lines of becoming problem solvers. Don't just get a degree and start mingling into the crowd which is already too much doing the same thing. Basic काम सब लोग कर रहे हैं. What the world needs now is those people basically जो 20 साल पहले की डेंटिस्ट्री में नहीं जी रहे. अगर आप आज के डेंटिस्ट हो तो आपको आज की डेंटिस्ट्री सीखनी पड़ेगी और उसके आगे के फ्यूचर ट्रेंड्स को अपनाना पड़ेगा. आई ऑलवेज गिव एग्जाम्पल ऑफ नोकिया. Nokia used to be the biggest mobile phone device seller across the globe, including India. Then suddenly Nokia lost it. Someday a company called Samsung ने टच स्क्रीन डेवलप किया. Nokia ने कहा नहीं यार, 10 साल से मैं फ़ोन बेच रहा हूँ, वो पुराने वाले फ़ोन ही कीपैड वाले सही हैं. Let us stick to that. टच स्क्रीन आज नया नया लग रहा है, कल को बेकार हो जाएगा. And everybody knows the history. You are no longer using Nokia any time in your life. That is, don't become extinct, don't become a problem, rather than become a problem solver. Okay, so if somebody asks you what is the future of dentistry, you tell simple answer: future is not about dentistry, future of being you into the future of dentistry. How you yourself make ready for that future is important. If you are ready for next generation dentistry, you will be reaching on the top. Henry Ford, a legend, has said a very nice quote on this. A market is never saturated with a good product, but it is very quickly saturated with a bad one. Market always welcomes people people and products and services who are innovative, who are moving with the time, and who are definitely moving ahead of time. So if you yourself, your academic qualification, your experience, your skills, your amalgamation of everything is future ready, then nobody can outcast you. अब बात आती है कैसे अपना फ्यूचर सुधारोगे आप. अब आपने BDS चूज किया, you are doing your BDS. I hope everybody is doing from a great college,
बट येस देर आर फ्यू कॉलेजेस विच आर नॉट मेकिंग सेंस. अगर आपने वो स्किल्स वो नॉलेज वहां नहीं ली है, स्टिल आई वुड से देर इज अ टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ. अगर बाई चांस, प्लीज आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, इफ यू आर डूइंग BDS फ्रॉम अ वेरी बैड कॉलेज where teachers are not at all interested in teaching you, where there is no OPD, where there is no good, you can say, mentorship happening जो आपको interest पैदा करे dentistry में, I think you should realize you are in a bad place. Start identifying those colleges and make sure you never end up going there again for MDS. So now if your BDS journey had not been great, you can improvise by doing MDS. अब MDS कहाँ से करोगी? डेफिनेटली उससे बेटर कॉलेज से. पढ़ाई तो लगेगी, कोई भी एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है. देयर इज नो शॉर्टकट ऑन दैट. एवरीबडी, इफ यू वांट टू से IITians, दे स्टडी मोर टू गो टू IIM. IIM वाला कुछ और पढ़ के आगे कुछ और ही कर रहा होता है. सब लोग लाइफ में एक स्टेज तक पहले पढ़ते हैं, उसके बाद दे स्टार्ट थिंक ऑफ अर्निंग. Okay, you are at BDS at the age of hardly 22, 23, 24. 22, 23 is not an age of settling down. It is the age of exploring more horizons in your own field. Okay, 20-21 साल में सिर्फ BA BCom वाले ही सोच सकते हैं एक 20-25 हज़ार की नौकरी. You are made worth more than that, lakhs and lakhs of rupees on that. Okay, I'll give you a very very basic example of a pyramid of success in your profession that is called dentistry. अगर इस पिरामिड को ध्यान से देखोगे, only top 20% of the people end up reaching the top 20% of the pyramid. 80% are always below. एंड ये 80% कौन होते हैं? जो दिन रात अपने ही प्रोफेशन को क्रिप करते रहते हैं, गंदा बोलते रहते हैं, काम नहीं करना, सिर्फ एक कोई 10-20-50 हज़ार की नौकरी में दे आर मोर देन हैप्पी एंड दे आर नॉट प्रोग्रेसिवली मूविंग टूवर्ड्स हायर साइड ऑफ द पिरामिड. अब टॉप 20% में देर इज नो डेफिनेशन. टॉप 20% में BDS भी होता है, MDS भी होते हैं. People who have done BDS, MDS and something else also, they are also there. MDS में there are oral surgeons, there are prosto, pedo, PhD, OPAT, सब मिलेंगे आपको इस टॉप 20% में, एंड सब आपको 80% में भी मिलेंगे. Now what makes them different is these 20% people have done lot of exploration in their life. They think beyond your limitations. कि BDS किया है तो ये नहीं है कि बस आज ही जिंदगी का सारा पैसा आज ही कमाना है, बस यही चलेगा, यही सक्सेस है मेरी. और MDS किया है तो दिस इज द एंड ऑफ माय एजुकेशन. आई गिव एग्जांपल ऑफ बीइंग like suppose you are doing prosto, you have done prostodontics, you will be doing implants in your MDS college, or by chance you are in a college जहाँ implants नहीं करने देते, still not to worry, learn prosto. इम्प्लांट कोर्स बाद में बाहर से करके सीख लेना, किसी ने मना थोड़ी किया आपको. रिमेंबर फॉर योर लाइफ द डे यू फील दैट MDS के बाद भी आपकी लर्निंग खत्म हो गई है, दैट इज द एंड ऑफ डे विल स्टार्ट फ्रॉम दैट डे. उस दिन से आपका अंत शुरू हो जाएगा. ओके, you have to keep on growing. Don't become Nokia in your life. If suppose you are doing perio, okay, you are doing perio, you are learning implants, but now you are not confident in implant prostodontics, then learn implant prostodontics के courses होते हैं 10-20-50 हज़ार रुपए. जो spend money is not about spending, it's investing that money in a new skill, in a new knowledge system. Learn it and move forward in life. That is how you move up in the pyramid. ये 20% people are those people who try each and every, जिसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, सब कुछ ट्राई करते हैं. ये पढ़ाई भी करेंगे, ये क्लिनिकल स्किल्स भी सीखेंगे, ये कोर्सेज भी करेंगे, ये बिजनेस भी ट्राई करेंगे, ऐप भी बनाएंगे, कुछ और नया ट्राई करेंगे, यूट्यूबर भी बनेंगे, ब्लॉगर भी बनेंगे, व्हाट नॉट इन टुडेज टाइम. लॉट ऑफ plethora of options available for you guys to come on top. The more you try, the more you explore, the more you fail in your initial days, the more you learn actually. Okay, a success story is not defined by your success end point. It is defined by the journey you have taken, the path you have taken, and it is how many hurdles, how many failures you came across, and how you overcome those failures make you successful. You all know me, starting with my life coaching institute called Target Educare, वो बंद हो गया. We joined like entire team
of my supporters, I would say my backbone, we all collaborated with Dr. Bhatia Medical Coaching. 4 फरवरी 2023 को everybody left Dr. Bhatia Medical Coaching. We came on ground zero. This was like starting from scratch again, but we were confident enough to start again, and by God's grace and with your support and blessings we are rising again. आज आपको लगेगा हम नीचे हैं, but yes, we are moving in the direction, will come fast very soon. Okay, so life will have these ups and downs, but you have to keep on rising up and grow. You cannot just stick to one BDS or MDS degree. Remember, world does not want degree holders. World wants people who evolve, keep on changing. Maybe you change the trend, maybe you change the quality of profession, maybe you invent something, maybe you do research, maybe you do business out of it. कुछ तो करोगे तभी आप ऊपर जाके पिरामिड पे बैठोगे and become rich, famous and successful. The ultimate goal for everybody is to become rich and famous, right? It's not about becoming a prosthodontist or a pathologist or a endodontist or an oral surgeon. Ultimately, everybody wants to be successful. So if you want to be successful, you have to keep on rising. You just can't sit at bottom and wait for success to fall back on you. It will never come down. People will always occupy this spot and settle down. So you also have to keep on rising and settling down. So conclusively, if we say what is the right question, you should ask the right question. अगर आपको कहीं पे कोई अब दिखाई देगा ना बोलता हुआ, डिस्कशन करता हुआ या क्वेश्चन पूछता हुआ कि डेंटिस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है, बीडीएस का कोई फ्यूचर नहीं है, एमडीएस का कोई फ्यूचर नहीं है, you remember your answer. You are asking a wrong question. So what will be the right question? First, are you ready for the dentistry in future? क्या आपने अपने आप को तैयार किया है उस लेवल के लिए? आपने वो स्किल सीखी है, वो नॉलेज गेन करी है, वो एक्सपर्टीज ली है, वो एक्सपीरियंस गेन किया है? Then you are ready for future. Are you a problem solver? Problem solver is the person who identifies, who first explores, अपनी चीज को समझता है, उसमें प्रॉब्लम ढूंढता है और उसको सॉल्व करते हैं. I'm very sure most of you have been watching Shark Tank. This is the word which is now entire world is using, that you have to solve the problem in the system to grow in your life. Third, are you prepared for the future demands? जो भी फ्यूचर में आपको लगता है डिमांड्स आएंगी पेशेंट्स की या ट्रीटमेंट ऑप्शंस की या मटेरियल्स की या कुछ भी, आर यू रेडी फॉर दैट? फोर्थ, आर यू रेडी टू एक्सप्लोर अगेन एंड अगेन, फेल, get up and explore again? If you are of this trait, nobody can stop you entering that top 20% of your pyramid. Lastly, are you a valuable product for the world? If yes, then you are future ready person. Dentistry will have future, medical will have future, everybody will have future, every profession will have future. It's you have to make ready for that future in that profession. So remember the quotes of most learned people on this planet. A lot of people have talked about success. Future depends on what you do today, and the best way to predict your future is to create yourself. Thank you. Dr. Amit Lall this side signing off. We'll come up again with more talks on such topics. Thank you. Have a great day.